Imagine you have 100 rupees. You have two choices. You can either watch a movie or buy a book. So you're choosing the movie, right? But what did that decision really cost to you? This is all about today's topic. So, hi everyone, let's understand this simple topic in just 2 minutes. So, today's topic is opportunity cost. हमारे पास जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी, एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमें उनमें से एक चूज़ करना होता है, राइट? सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो चीज़ें हैं, बनाना एंड एप्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड एन एप्पल. तो हम जो बनाना है उसको कुर्बान कर रहे हैं एक तरह से, वी आर लीविंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एप्पल, ठीक है. तो अब जो बनाना है उसकी क्या कीमत रही, किस कीमत पे हमने उसे छोड़ा है, तो दैट चॉइस हैज़ अ कॉस्ट विच इज़ नोन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. अब इसको हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ समझते हैं. So opportunity cost is the value of the next best alternative जो हम give up करते हैं when making a choice of choosing an apple. Let's understand this with the help of an example. So you have 2 hours, ठीक है. You have two choices. You can either study economics or watch a web series. So you choose to study. So what is the opportunity cost in it? It is the web series that you didn't watch. ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो हम गिव अप कर देते हैं, जो हमने वेब सीरीज़ कर दी हैं व्हेन मेकिंग अ चॉइस, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So now why to study this opportunity cost? Because it helps us make better and smarter choices. Because हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो हमें रिमाइंड ये करता है दैट हम कुछ ना कुछ लेने के बदले कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है. टू गेट वन वी हैव टू लीव द अनदर वन विच हैज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर? सो एवरी चॉइस हैज़ अ कॉस्ट and that cost is called opportunity cost. So I hope you all are very much clear about this topic. Any certain doubt, do let me know in the comment section. I'll definitely clear it out. Thank you.